In my earlier video lecture, we discussed the characteristics and importance of entrepreneurship. Now, in this video lecture, we discuss the challenges and issues of entrepreneurship and barriers of entrepreneurship. Okay, student starting a business is a big achievement for many entrepreneurs, but maintain one is the larger challenge. There are many standard challenges that face every business, whether they are large or small. These include things like hiring the right people, building a brand, and so on. However, there are there are some that are unique to small businesses. One most large companies have grown out of long ago. We will look at the five biggest challenges and issues in entrepreneurship. Okay, so बिजनेस चालू रखना एक अपने आप में ही एक बिग अचीवमेंट है. ओके, चालू रखना और मेंटेन करना उसे ये भी उससे ज़्यादा चैलेंजिंग है. ओके, सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं. उसमें से टोटल 5 चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे. फर्स्ट वन, क्लाइंट डिपेंडेंस. If a single client makes up more than half of your income, you are more of an independent contractor than a business owner. Okay, so diversifying the client base is vital to growing a business, but it can be difficult, especially when the client in question pays well and on time. For many small businesses, having a client willing to pay on time for a product or service is a godsend. Unfortunately, this can result in a longer term handicap because even if you have employees and so on, you may be still acting as a subcontractor for a larger business. This arrangement allows the client to avoid the risk of adding payroll in an area where the work may dry up at any time. All of that risk is transferred from the company to you and your employees. This can work out. This can be work out fine provided that your main client have a consistent need for your product or services. However, it is generally better for businesses to have a diversified client base to pick up the slack when any single client quits paying. Okay, so client dependence मतलब कि सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ पार्ट है और वो पार्ट जो है सिर्फ एक स्पेसिफिक कंपनी ही उठा रही है. ओके, सो बाकी कोई आपके पास ऑर्डर नहीं आ रही है, तो ये हुआ क्लाइंट डिपेंडेंस. ओके, सो हम उसके ऑर्डर्स पे ही वेट करेंगे. उसका ऑर्डर आए तो हमारे पास काम है, नहीं आए तो ना है. ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, सभी मतलब हम क्या हो जाएंगे, बिजनेस ओनर नहीं, एक कॉन्ट्रैक्टर हो जाएंगे. ओके, मतलब सिर्फ जो ऑर्डर आई है तो उसको सप्लाई करना. तो ऐसा न करके हमें ऐसे क्लाइंट्स या ऐसे कस्टमर्स ढूंढने होंगे कि जो हमारा वो पार्ट है वो खरीदेंगे. ओके, सो डिपेंडेंट होने के बजाय हम क्या करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे क्लाइंट को, सो हम दूसरे क्लाइंट को भी सप्लाई कर सकेंगे. सो इसके वजह से रिस्क जो है वो कम होगी. ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्लाइंट डिपेंडेंस. ओके, देन सेकंड इज मनी मैनेजमेंट. हैविंग इनफ कैश टू कवर द बिल्स is must for any business, but it is also a must for every individual.
whether it is your business or your life. One will likely emerge as a capital drain that puts pressure on the other. In order to hurt, in order to head off this problem, small business owners must either be heavily capitalized or be able to pick up extra income to shore up cash reserves when needed. This is why many small businesses start out with the founders working a job and building a business simultaneously. While this split focus can make it difficult to grow a business, running out of cash makes growing a business impossible. Okay, so money management becomes even more important when cash is flowing into the business and to the owner. Although handling business accounting and taxes may be within the capabilities of most business owners, professional help is usually a good idea. The complexity of a business books go up with each client and employee, so getting an assist on the bookkeeping can prevent it from becoming a reason not to expand. ओके, सो मनी मैनेजमेंट ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक चैलेंज है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। क्यों चैलेंज है? क्योंकि जो भी मनी आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है बिजनेस में, वो कैसे उसको कहाँ पे रखना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, या रिजर्व में कन्वर्ट करना है, या कैपिटल रेज करना है, ये सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पैसा न हो तो कोई कोई बिजनेसमैन ऐसा भी करता है कि कहाँ पे जॉब करो और फिर पैसे कमाओ और फिर उसको बिजनेस में लगाओ। ओके, सो ये इसमें क्या होता है, फोकस जो है वो स्प्लिट आउट होता है। तो इसके वजह से अगर आउट ऑफ कैश हो गए, मतलब कैश नहीं है आपके पास, मनी मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आई, तो बिजनेस के लिए बहुत रिस्क है। So it is a challenging job for entrepreneurship to make proper adjustment of their money. Okay. Next one is fatigue. Fatigue means cause to feel tired or exhausted. Okay. The hours, the work, and the constant pressure to perform wears on even the most passionate individuals. Many business owners, even successful ones, get stuck working much longer hours than their employees. Moreover, they fear that their business will stall in their absence. So, they avoid taking any long breaks away from work to recharge. When fatigue sets in, the awareness with the hours and the results can lead to rash decisions about the business, including the um, including the desire to abandon it completely. Finding a pace that keeps the business humming without grinding down the owner is a challenge that comes early in the evolution of a small business. Okay, so ब्रेक लेना चाहिए। सो आफ्टर द ब्रेक दे कैन बी रिफ्रेश्ड इन देयर वर्क और बहुत ही स्फूर्ति से वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन कोई कोई एंटरप्रेन्योर रहते हैं कि वो इतने टायर्ड होते हैं, इतने एग्जॉस्ट होते हैं काम करते हुए भी, लेकिन फिर भी वो उनके मन में ये शंका आती है कि अगर हम ना हो तो बिज़नेस जो है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। सो इसके वजह से वो क्या करते हैं, गेट स्टक वर्किंग फ्रॉम मच लॉन्गर आवर्स। उनके एम्प्लॉय से भी ज़्यादा वो काम करते हैं। ओके, क्योंकि उन्हें स्टार्ट होता है कि फियर होता है, डर होता है कि अगर वो नहीं हो, उनके अब्सेंस में बिजनेस जो है, मतलब ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होगी और जो बिजनेस है वो गिर सकता है। ओके, सो दे अवॉइड टेकिंग एनी लॉन्ग ब्रेक्स। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी है। ब्रेक होने के बाद
बिजनेस जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाला जा सकता है। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। नेक्स्ट वन इज फाउंडर डिपेंडेंस। If you get hit by a car, okay, suppose if you get hit by a car, is your business still producing income the next day? ऐसा हो सकता है? A business that can't operate without its founder is a business with a deadline. Many business suffer from founder dependence. मतलब कोई तो खड़ा करता है बिजनेस और वो बेच के चला जाता है, जो कोई चला रहा है वो दूसरा ही है कि जिसने बिजनेस खड़ा नहीं किया लेकिन वो चला रहा है। ओके, and this dependence is often caused by the founder being unable to let go of certain decisions and responsibilities as the business grows. Meeting this challenge is easy in the theory, okay, but a business owner merely has to give over more control to their employees or partners. In practice, however, there is a big stumbling block for founders because it usually involves compromising on the quality of work being done until the person doing the work learns the ropes. Okay, so founder dependence जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत बड़ा चैलेंज है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, क्योंकि अगर किसने बिजनेस खड़ा किया है तो वो अगर बेच देता है किसी और को तो उसमें उसका फाउंडर डिपेंडेंस नहीं रहेगा। ओके, सो उसमें किस मतलब एम क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे स्टार्ट करना है, ये सब तो पता है, लेकिन जो फाउंडर का मतलब जो एम होता है, क्योंकि वो नहीं रहता बिजनेस में। ओके, सो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि फाउंडर डिपेंडेंस होना चाहिए, मतलब जिसने बिजनेस खड़ा किया है उसी ने अगर वो बिजनेस चलाया तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन जो है वो मिलता है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज of entrepreneurship. Okay, then balancing, last one is balancing quality and growth. Even when a business is not founder dependent, there comes a time when the issues from growth seems to match or even outweigh the benefits. Whether a service or a product, at some point a business must sacrifice in order to scale. This may mean not being able to personally manage every client relationships or not inspecting every white list. Unfortunately, it is usually that level of personal engagement and that attention to detail that makes a business semi successful. Therefore, many small business owners often find themselves tied to these habits to the detriment of the company's growth. There is a large middle ground between shoddy work and an unhealthy obsession with quality. So, it is up to the business owner to navigate the company's process towards a compromise that allows scale without hurting the brand. Okay, so these are 5 challenges entrepreneurs have to face. Okay, लास्ट वन जो है बैलेंसिंग क्वालिटी एंड ग्रोथ, ये मेंटेन रखना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, सो हर एक ऑर्डर में सेम क्वालिटी रखना, और ये क्वालिटी रखते रखते जो बिजनेस है वो भी ग्रोथ, उसका भी ग्रोथ होना चाहिए। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, so these are challenges but not death sentence. One of the worst thing a would-be business owner can do is to go into a small business without considering the challenge ahead. We have looked at some things.
that can help make these challenge easier, but there is no avoiding them. An important step in overcoming a challenge is knowing the size of that challenge. Beside a competitive drive is often one of the reasons people start their own business, and every challenge represents another opportunity to compete. Okay, so these are the total 5 challenges have to face entrepreneurs. Then barriers barriers to entrepreneurship. This very first barrier is corrupt and unsupportive business environment. Lack of supportive and market augmenting governmental regulations serve as a barrier to entrepreneurship. Okay, so हमारे यहाँ पे जब सरकार बदलती है तो कोई फेवर में होता है, कोई फेवर में नहीं होता है. ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या होना चाहिए कि करप्ट एंड अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए. ओके, मतलब जो कुछ भी लॉज हैं, जो कुछ भी रेगुलेशंस हैं वो रेगुलरली फॉलो करने चाहिए. ओके, सो अगर ऐसा एनवायरनमेंट रहा तो ये जो करप्ट एंड अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बैरियर न बन के अपॉर्चुनिटी के तरीके से इसको देखा जाएगा. ओके, सेकेंड वन, एम्प्लॉय रिलेटेड डिफिकल्टीज. Building an employee asset base for the enterprise is one of the more daunting and sometimes overlooked tasks. Entrepreneurs must find and select the best qualified employees who are motivated and willing to grow with the venture. Then they must ensure the employees do not leave. This task become a barrier when employees' expectations increase. Governmental regulations related to labor employment is hardened and employee cost grow. Employee cost is more than pay. It includes healthcare, workers' compensation, social security taxes, and health and safety regulations. Okay, so एम्प्लॉय को संभाल के रखना, उसके रिलेटेड हर डिफ़िकल्टी जो है वो भी देखना, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है. अगर ये एंटरप्रेन्योर को आ गया संभालना तो वो बैरियर न होके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट वन इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड रिसोर्सेज. Okay, so students, finding the money to start up an enterprise is a leading barrier to entrepreneurship. Without funds, any person cannot begin to organize, to train, to develop, and to sell the product. Okay, so shortage of fund is the another barrier to entrepreneurship. Then lack of entrepreneurship opportunities. Venture creation requires existing marketplace opportunities with possibilities known to the entrepreneur and favorable odds for success for entrepreneurial spirit to succeed. Okay, opportunity जो है वो देखनी चाहिए. अगर वो नहीं देखेंगे तो वो सबसे बड़ा बैरियर होगा entrepreneurship के लिए. ठीक है, देन लैक ऑफ एडिक्वेट entrepreneurship ट्रेनिंग. यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं मिलती है और जो कुछ भी होता है वो ओनली ऑन पेपर रहता है. एक्चुअल तो ट्रेनिंग अच्छे से मिलती नहीं है. ये एक बड़ा बैरियर हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. सो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कैन बी अ रोबस्ट incubator for new ventures. This includes training to technical skills, managerial skill, entrepreneur skills, and entrepreneurship. Okay. Then next, lack of appropriate technical and practical skill also. Okay, so people tend to use the skills they have acquired to pursue entrepreneurial initiative. Lacking the appropriate skills and knowledge inhibits economic development. Okay, so entrepreneurship के लिए भी ये बैरियर है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ये बैरियर है.
ओके, सो टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स होने चाहिए एंटरप्रेन्योर्स में. ओके, नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ मार्केट एक्सपीरियंस. The essence of leadership is first learning that doing before leading. Therefore, the capability to start a business is moved by previous education and work experience. Okay, rushing into a new market because it looks attractive and rewarding without having some experience and background in it can be failure. Experience in a related business before startup is positively correlated to the probability of success. Okay, so market experience होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ये बहुत बड़ा बैरियर बन सकता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. Okay, next one is fear of failure. Entrepreneur fears in mind while deciding to take actions फॉर बिजनेस. उनके मन में बहुत सारा डर बैठा बैठा हुआ होता है कि अगर आगे जाके बिजनेस फेल हुआ तो क्या करेंगे. ये डर अगर पहले से बैठ गया तो कौन सी भी फर्म जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी. ठीक है, सो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है एंटरप्रेन्योर्स के लिए. एंड द लास्ट वन इज एवर्जन टू रिस्क. A psychological barrier closely related to the fear of failure is aversion to risk. Entrepreneurs must take initiative, create structure with a social economic mechanism, and accept risk of failure. Entrepreneurs have to be risk takers, while those who are risk averse will seek the security if an existing establishment. Okay, so अवॉइड नहीं करनी है रिस्क लेनी है, लेकिन ओनली कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है. ओके, सो अगर नहीं ले सकते तो ये बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. ठीक है. ओके स्टूडेंट, आई होप now you better understand the challenges, issues of entrepreneurship and barriers to entrepreneurship. Okay, see you soon in my next video. Till then, take care. Thank you.